students. I'm Dr. Komal Rathod, Assistant Professor Kamal Nritya in Faculty of Ayurvedic Science in Jyoti Vidyapeeth, People's University, Jaipur, Rajasthan. For today's topic, we will talk about rheumatic fever in children. So, what is rheumatic fever? So, I will tell you overview. Rheumatic fever is one of the complications associated with strep throat infection. It is a relatively serious illness that usually appears in children between the age of 5 to 15. So, etiology is rheumatic fever is an autoimmunological mediated inflammation disorder which occurs as a sequel to group A streptococcal pharyngeal infection. This is multi-system disease affecting the heart, joints, brain, cutaneous and subcutaneous tissues. Acute rheumatic fevers remain an important preventable cause of cardiac disease. It is the most common in 6 to 15-year-old. That's I before told you. A family history of rheumatic fevers and lower socioeconomic status are additional factor. Here we are, and then streptococcal infection, throat infection is occur. So hemolytic streptococci, and uh, here we are. The streptococci goes through blood in joints, in heart, skin, and nervous system. And immunological reactions occur. So rheumatic fevers 10 to 14 days later, much longer gap for chorea. Again, pathogenesis. Here's the streptococci. Its capsules हाइड्रोलोनिक एसिड से जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं और इसकी सेल वॉल जो कि एम प्रोटीन एंड एम एसोसिएट प्रोटीन से मिलकर बनी होती है जिससे मायोकार्डियम मतलब कि हार्ट की मायोकार्डियम पे इफेक्ट होता है और कार्डियक डिजीजेस होती हैं और जो इसका ये कार्बोहाइड्रेट होता है सेल वॉल के अंदर इसमें एन एसिटिल ग्लाइकोसामाइन होता है जो कि हार्ट के वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वेल्वुलर जो टिश्यूज होते हैं उनको खत्म करते हैं, उनको डैमेज करते हैं और जो इसके अंदर का ये प्रोटोप्लास्ट और ये जो मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटीन और लिपिड और ग्लूकोज से बनी होती है ये भी क्या बोलते हैं ये भी मायोकार्डियल सैक्रोलिमा और सबथैलेमिक कॉर्डेट न्यूक्लियाई ब्रेन के इनको अफेक्टेड करती है और फर्दर डिजीजेस कॉज करती हैं। यहाँ पे पैथोजेनेसिस बता रखा है देयर इज नो डायरेक्ट इन्वेजन to the tissue by the microorganism, but it is an autoimmune disease that involves antigen-antibody interaction. It is due to an immunological reaction that is the delayed sequel of group A beta hemolytic streptococcal infection of the pharynx. It must be pharyngeal infection, not the skin infection. Here, a group A streptococcal, VAS pharyngeal infection. Body produce antibodies against streptococci. These antibodies cross-react with human tissue because of the antigenic similarity between streptococcal component and human connective tissue. There is a certain amino acid sequence that is similar between gas means group A streptococcal and human tissue. Immunological mediated inflammations and damages, autoimmune. Human tissue which have antigenic similarity with the streptococcal components like heart, joint, brain, and connective tissue. This information means कि ब्लड मतलब कि जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप ए जो स्ट्रेप्टोकोकल है उस इन्फेक्शन उसके अगेन एंटीबॉडी बनाता है तो ये जो एंटीबॉडी होती है ये एंटीबॉडी इस जीएएस और ह्यूमन स्ट्रक्चर इन दोनों का सेम सीक्वल होता है एमिनो एसिड्स इनका सेम होता है तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो जीएएस यानी कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के समान ही ह्यूमन टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है तो एक तरह से ये ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती है क्योंकि बॉडी का एंटीबॉडीज जो है वो जीएएस के समान बॉडी के टिश्यूज भी कहाँ के हार्ट जॉइंट ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू इन सबको डैमेज करते हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। Clinical manifestation. The infection often precedes the presentation of hemolytic fever 2 to 6 weeks. Acute rheumatic fever is diagnosed using the revised Jones criteria.
एक्यूट रूमेटिक फीवर जो है उसको डायग्नोज कर सकते हैं जब हम जॉइंट्स क्राइटेरिया को देखेंगे, which consist of clinical and laboratory finding. One major or two major. One major and two major or two major with evidence of recent group A streptococcal disease strongly suggests the diagnosis of acute rheumatic fever. Here are major criteria of Jones system for acute rheumatic fever. Like sign is there, polyarthritis, carditis, chorea, Sydenham's disease भी कहते हैं chorea को, erythema marginatum and subcutaneous nodules. पॉलीआर्थराइटिस है तो मींस कॉमन स्वेलिंग, लिमिटेड मोशन, टेंडर एडिमा रखेगा, माइग्रेशन रहेंगी एंटीबॉडीज का, लार्ज जॉइंट्स, नो रेजिडुअल डिफॉर्मिटी, रैपिड रिस्पांस टू एस्पिरिन, राइट. कार्डाइटिस, पेनकार्डाइटिस, वॉल पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम. लाइक डायग्नोसिस करेंगे तो हमें मरमर की साउंड सुनाई देगी, हार्ट फेलियर होगा, कार्डियक एनलार्जमेंट मिलेगा, पेरिकार्डियम रबिंग और इफ्यूजन मिलेगा. So in these sign system, two more symptoms, two major और one minor और स्ट्रेप्टोकोकल का रिकरेंट इन्फेक्शन, और अगर two major symptoms मिलते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि acute rheumatic fever ही है. माइनर क्राइटेरिया में है, क्लिनिकल फाइंडिंग में ये तीन आते हैं, फीवर, आर्थ्रेल्जिया और प्रीवियस rheumatic fever. लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में एलिवेटेड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, C-reactive प्रोटीन एलिवेटेड मिलेगी, और ECG करवाते हैं तो प्रोलॉन्ग PR इंटरवल्स मिलता है. एविडेंस ऑफ रिसेंट ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज. सपोर्टिंग एविडेंस फॉर एंटीसीडेंट ग्रुप A streptococcal infections, scarlet fever, positive throat culture in 25% of patients, rapid streptococcal antigen test, elevated or rising streptococcal antibody titer, ASO. It is very important, ASO, anti-streptolysin, or anti-DNase B, AH, anti-hyaluronic acids. Like these all are evidence to recent streptococcal disease infections, if they all are present in the body. Rheumatic fever diagnosis, subcutaneous nodules in the back of the patient, nodules of rheumatic arthritis are larger. Subcutaneous nodules. Like erythematous patches with central clearance. Erythematous patches हैं इसमें central clears portion दिखाई देता है, ये भी diagnosis में help करता है. And then treatment. Treatment is bed rest 2 to 6 weeks till inflammation subsides. Supporting therapy, treatment of heart failure, eradication of organism, anti-streptococcal therapy, benzathine, penicillin, long-acting 1 to 2 million units once, IM injection, or oral penicillin 10 days. If allergy to penicillin, erythromycin 10 days is given. Anti-inflammatory agents, A for polyarthritis and mild carditis, anti-inflammatory therapy with salicylates, aspirin 100 mg per kg per day for arthritis, and in absence of carditis, 4 to 6 to be tapped off. For severe carditis with cardiomegaly, use steroid, corticosteroid 1 to 2 mg per kg per day, 4 to 6 weeks to be tapered off. And now prevention. Secondary infections, secondary prevention to recurrent attack, benzathine penicillin D 1 to 2 million unit IM every 4 weeks, and penicillin B 250 mg twice daily orally. If allergy to both, erythromycin 250 mg twice daily orally. Duration to secondary rheumatic fever, prophylaxis, rheumatic fever plus carditis lifelong, rheumatic fever without carditis 5 years or until 21 years, whichever is longer. Continuous prophylaxis is important since patient may have asymptomatic group A streptococcal infection. And now prognosis. Rheumatic fever may cause permanent damage to the heart but not to the joint, only arthritis. Thus it is said rheumatic fever leaks the joints but bite the hearts. The prognosis of acute rheumatic fevers depends on the degree of permanent cardiac damage. Cardiac involvement may resolve completely, especially if it is the first episode and the prophylactic regimen is followed. The severity of cardiac involvement worsens with each recurrence of rheumatic fever. So it's all about
all about rheumatic fever. Short description. Hope you like it and it is very beneficial to you. Thank you.